स्टार्ट करते हैं क्लास में। So morning I was discussing this, I started involutes, है ना? Yes sir. Involutes. So involutes क्या बताया था अभी? याद है कुछ? Involutes is a curve. Which curve? Where all the tangent lines to some curve C. If you have a curve C, then if you have tangent here, then what? You have another curve, suppose. This is a curve C1. Intersect the tangent line. So this will be orthogonal to this tangent line. है ना? ये तो कह रहा था हमने. If you have two curves C and C1, so the tangent at this will be, if it is T1, so this will be normal. You can say if it is T, it will be normal to this. ये भी कह सकता हूँ, क्या बात है? क्यों भाई? Yes sir. Yes sir. Here. You can see there, this is a curve C1. So all the tangents to a curve C is normal to the tangent, or you can say orthogonal to this tangent. Then the curve C1 is called involute of this curve C. And we just दोनों सर आपस में वो होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। दोनों कर्व डिपेंडेंट होते हैं आपस में। हाँ, dependent means ये कि the curve C1 will be lying in the tangent surface in such a way that this tangent of this C is mutually orthogonal to the C1 tangents to the C1. तो ये कर्व इस तरीके से होगा, है ना? तो all the tangents will be perpendicular to the tangents on the curve C1. So I will say that C1 is the involute to C. ये होता। और इसकी हमने क्वेश्चन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट. So equation of involute, it was coming R1. If I was denoting this by R1 by taking some position vectors in this way, suppose you have O, this is your RS, this is I am taking some R1S. So R1 was coming R times R plus C minus ST. Okay, it is the equation. So now you are doing one problem, I think, curvature of this. That is the problem. Show that the curvature of this, of the involute R1 is equal to R plus, यहाँ minus था, sorry, plus नहीं था, it was minus, no? Yes, C sir. minus ST. So that the curvature of this involute, no? So this C1 is called involute to C. For every curve, there corresponds a curve satisfying this property that tangents are mutually perpendicular to the tangents to that curve. This curve is called involute. So the curvature of this involute is given by, C minus S. I told you this is a distance. Mod of C minus S is distance between mod of R1 minus R. You can find it from here. तो अगर curvature R1 का suppose I am denoting by kappa 1, तो kappa 1 square is equal to kappa square plus tau square. अभी जो suffix में 1 है, it means I am taking the curve C1. अगर kappa और tau है, it means kappa is the curvature of C, tau is the torsion for C, and if one is suffix is there, it means
It is the C1. curvature of C1 curve. That C1. means involute Yes, का sir. है. So you just show that this is equal to C minus S whole square into kappa square. ये एक मतलब curvature का ये होगा. So it is the relation between the curvature of involute and curvature of the curve. ये हमें show करना है. Okay. So let us take the solution. So we have already a curve. We have involute whose equation is R1 is equal to R plus C minus ST. No. S is the parameter. So I want curvature. I will be reading dr1 over ds. है ना? Curvature के लिए you need this derivative. So this dr1 over ds will be what? R dash. है ना? I am assuming that all the curve having the same parameter as here. So dr1 over ds, it is also a function of s basically, r dash plus c minus s. So here t is a function of s, so you have to do by part. Yes, sir. तो क्या आएगा? तो plus c is 0 and s का 1, so you have minus t Minus and 1. Yes, sir. Minus plus c minus s into minus S. t dash, है ना? And you know t is what? T is r dash, so this term is cancel out. T is r dash, तो t तो tangent आपका r का ही है ना? So you what you got? C minus S T dash. Okay. R ka T is the tangent to R. So this T is what? T is nothing but R dash. T is nothing R dash. Okay. So this is cancelled out. You got C minus S T dash. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप mod ले लें, क्योंकि मुझे mod की जरूरत पड़ेगी, तो you can find dr1 over ds mod is how much? Mod of C minus S mod of C minus S and this mod T dash है ना, that will be what? T dash को क्या लिख सकता हूँ मैं इसको next step में, और इसे solve कर लो. तो T dash की वैल्यू क्या होती है? kappa n है ना, because I want the formula in terms of n. So when you will take it, so C minus S mod of kappa n, mod n is 1, so it will be mod of C minus S kappa. It is the value of this mod n is 1, is a unit vector, tangent vector, unit normal vector. So dr1 over ds is this, you know. Okay. So now what is t1? Because curvature क्या है आपका? Curvature जो k1 जो है, kappa 1 will be what? Kappa 1 will be in terms of t dash, है ना? तो I will be needing t dash. So I will take firstly what is t1. So t1 will be what? Tangent is what? dr1 upon ds and divided by its mod. ये तो होता है. Tangent vector क्या होता है? Tangent is a unit vector. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. T is r dash, but here I am taking t1, so I can write dr1 over s over mod of dr1 over ds. No, because it's a unit tangent vector. Now this is what? dr1 over ds, you have calculated this. It is your C minus S kappa n and divided by mod of C minus S kappa. इसका mod है C minus S, है ना? अब you know C minus S, it may be positive, negative. ये तो सब जो आपके, they are some quantity, scalar quantity. So it will be what? It may be positive or negative, depends. C minus S. So what will be the quantity? You have some number upon by mod. तो जब आप divide करेंगे तो इसे क्या लिख सकता हूँ? Can I write plus minus n? बोलिए. They are not vector quantity actually. So if you have something like, if you have something a upon mod a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? Plus minus 1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये तो कुछ, it is not a vector quantity, स्केलर है कुछ. तो जब स्केलर से करेंगे आप, तो यहाँ पर बस ये हो सकता है कि ये प्लस आ जाए, माइनस, सिंपली प्लस माइनस है, सिर्फ साइन चेंज होंगे, है ना? तो आई कैन राइट प्लस माइनस एन, हो सकता है प्लस एन और माइनस एन. तो दिस इज योर t1.
So what about dt1 over ds? अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, है ना, dt1 over, भाई why I am finding this? Because I know कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्वेचर स्क्वायर इज मॉड ऑफ dt over ds स्क्वायर. ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसी से आता है ये. This is a formula for curvature square. I want in terms of square because, so that's why. So I will be needing dt over ds square. Okay. So ये आया t dash जो होता है आपके पास, है ना, ये t dash कितना होता है, t dash is कप्पा n. तो अगर मैं n डॉट n कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, t dash डॉट n इज इक्वल टू कप्पा. जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, n स्क्वायर इज 1, सेम उससे cos 0 इज 1. सो कप्पा स्क्वायर इज हाउ मच, टी डैश, है ना, इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि अब डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो मॉड ऑफ डी टी ओवर डी एस होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा. टी डैश स्क्वायर, इट इज सेम थिंग. सो आई वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो फर्स्टली आई विल फाइंड व्हाट इज डी टी वन ओवर डी एस, क्योंकि आई वांट कप्पा 1. सो डी टी वन ओवर डी एस विल बी व्हाट, प्लस माइनस एन डैश, ये एन जो निकाला है ना, एन डैश, एंड एन डैश इज व्हाट, it is plus minus, n dash की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस माइनस कप्पा t plus tau b. It is the value of n dash. In the morning I was discussing this. N dash is this, kappa t minus kappa t plus tau b. This is your plus minus sign. So what about tt1 upon ds1? If I am taking it with respect to some other parameter ds1, suppose s1 is the parameter, natural parameter with respect to c1, so this I can write dt1 upon ds upon ds1 upon ds. इसे हम ये लिख सकते हैं. Okay, dt1 over ds1 is what, dt1 over ds, ds1 over ds, and ds1 over ds is how much, ds1 over ds you can calculate, because s1 will be what, s1 is the natural parameter with respect to the curve c1. तो s का फॉर्मूला क्या था आपके पास, t नॉट टू t होता था. यहाँ पर अगर मैं इसके टर्म में ले लूं तो आई कैन राइट s नॉट टू s मॉड ऑफ r1 को with respect to c1 I am dealing, तो r1 dash s ds, है ना. It is the formula for arc length. So what is ds1 over ds here, mod of r1 dash s. ये लिख सकता हूं मैं, बताइए. वही फॉर्मूला आपका जो आर्क लेंथ का था, s इज इक्वल टू मॉड ऑफ t नॉट टू t, जो आप ये लिखते थे तो बस यार, लाइक t नॉट टू t mod of r dash t dt, है ना. There I was using the curve r. Now for c1 I have r1 curve, and the r1 curve is in terms of natural parameter some s, so I can say s1 is the length, so I can represent by this formula. So ds1 over ds is mod of r1 dash s. So this can be written as dt1 over ds upon mod of dr1, r1 dash is how much, mod of dr1 over ds. Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Keep talking in between. At least say yes sir. चलेगा, वरना कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया. तो I can write this on. यहाँ तक बताइए कोई स्टेप, अगर कोई भी स्टेप क्लियर नहीं है, कुछ भी एनीथिंग. देखो, I want to find curve kappa 1. Kappa 1 is the curvature with respect to this involute c1, है ना. तो kappa 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I will be finding dt1 over ds1 with respect to parameter of this c1. So I want to find this. So kappa स्क्वायर फॉर्मूला होगा dt over ds होल स्क्वायर होता है, तो I want dt1 over ds1. तो dt1 over ds1 I can write dt1 over ds, ds1 over ds. Now dt1 over ds I have just calculated, it is this.
and ds1 over ds can be written by this length formula, arc length formula. It is the value of ds1 over ds. So you got this. Now put the value of all these things. So it will be how much? Now dt1 over ds is this, plus minus kappa t plus tau b, and divided by mod of dr over, ये हमने यहाँ निकाला था, it was mod of dr1 over ds की वैल्यू, mod of c minus s and कप्पा. ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास. Now so now this kappa 1 square, it will be mod of dt1 over ds1 square. यहाँ पे हमने कर्वेचर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको याद हो, तो वहां मैंने कर्वेचर क्या लिखा था? द कर्वेचर वाज mod of r डबल डैश s निकाला था ना ये, फिर उसको सॉल्व करके dt by ds डॉट n आया था. कर्वेचर वाज आर्क लेंथ, तो कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था आपके पास? mod of r डबल डैश. mod of r डबल डैश का मतलब dt over ds. r dash is dr, r dash is what? t, and dt over ds this. ये फॉर्मूला, ये देखिए, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, mod of, ये फॉर्मूला था आपका कप्पा का, इसी से लिखा मैंने ये. So now kappa 1 square will be this mod square, ये कप्पा का है, इसका स्क्वायर करोगे तो mod r डबल डैश, डबल डैश का मतलब क्या है? dt1 over ds1. So its value will be what now? जब when you will be squaring, तो ये तो प्लस हो जाएगा आपका, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे आप तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? बताइए. कप्पा स्क्वायर टी स्क्वायर, कप्पा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस, माइनस साइन है ना, ट्वाइस. यस सर, ट्वाइस कप्पा टाउ टी बी टी बी अपॉन, अब नीचे स्क्वायर खोल देंगे आप तो मॉड इज पॉजिटिव, तो आई कैन राइट सी माइनस एस होल स्क्वायर एंड कप्पा स्क्वायर, कप्पा स्क्वायर. यस सर. अब यू नो टी स्क्वायर इज हाउ मच? टी स्क्वायर मींस टी डॉट टी. व्हाट इज टी डॉट टी? mod t into cos 0. So how much? T square is how much? 1 sir. 1. How much b square? 1. And what about t dot b? 0. Because they are perpendicular. So this thing I can write kappa square t square plus tau square b square upon denominator as it is. Okay, ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था. देखिए ना, कप्पा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. हाँ तो नहीं, ये तो 1 बन गया ना, सॉरी, टी स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 1 है ना, टी स्क्वायर इज आल्सो 1. यस सर. हाँ तो ये रह गया. ओके, हाँ, एंड दिस इज 0. सो दिस टी स्क्वायर इज 1, दिस बी स्क्वायर इज 1, बिकॉज दिस टी स्क्वायर इज नथिंग mod of t dot mod of t cos 0 which is 1. तो ये आपके पास ये शो करना था हमें, कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर ओवर दिस. सो इट इज द रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ अ इन्वोल्यूट एंड कर्वेचर ऑफ द कर्व. ठीक है भाई, एनी डाउट हियर? यस सर. चलो, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव, आई थिंक नेक्स्ट इज evolute. What is evolute? ये तो था involute. तो evolute क्या हो गया? ये जो कर्व C है, it will called evolute. If C is an involute, then involute of a curve C1, then C1 is called the evolute of evolute. Yes, this is called the evolute of C, है ना. अब देखो मैंने यहाँ पे नोटेशन चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि अब I want to drive the
एक्सप्रेशन फॉर इवोल्यूट, तो जिसे ड्राइव करना उसे हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी पीछे मैंने क्या लिया था, C1 को इन्वोल्यूट लिया था, तो Yes, C1 sir, आपने वाज C1 को द involute- C1 वाज द इन्वोल्यूट ऑफ द कर्व Yes, C। sir. तो अल्टीमेटली C इज द इवोल्यूट ऑफ C1, ये तो हुआ। लेकिन आई वांट Yes, टू sir. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस न्यू कर्व, तो जो न्यू होगा उसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली क्या है, C इज द इवोल्यूट ऑफ C1 और C1 is the involute of C, है ना, they are vice versa. So here, because I want to find the expression, so what I'm saying, if C is an involute of a curve C1, then ultimately C1 is called the evolute. Okay? Yes. हाँ, तो ये evolute, तो अगर I am having some curve C here, suppose ये आपका सर्व कर्व C था, जिसको मैं अगर मैं इन्वोल्यूट मान लूं, इसको इसे इन्वोल्यूट मानने का मतलब ये है कि here you will be having some curve which will be evolute to this, तो ये इसका evolute कहलाएगा। इसे अब हम C1 से कह रहे हैं because I will derive the expression for this evolute, तो जो न्यू कर्व है R1 के टर्म्स में आएगा, इसलिए इसे हमने कह दिया। तो same thing I will be doing here, if it is the evolute, you know, if you have a point here and it has a tangent, suppose this is a tangent T of this involute at a point PR, I am taking some point PR with respect to this coordinate frame. Suppose I am taking this O, and here in C1 you have some point, so I can take the position vector, and this is some R1, and this position vector I can take here R. It is your C original curve, इसका evolute जो है वो C1 है। Suppose ये point आपका PR है, it is some point P1 R1। अब मेरा suffix जो है वो evolute के ऊपर आ जाएगा, because I want to find evolute, तो the suffix 1 representing evolute curve, and you know कि if this is a tangent and this is a tangent, so this tangent T1, if I am taking this new tangent, suppose I am taking in red color, the tangent of this evolute will be perpendicular to this tangent, है ना, ये अगर tangent हम ले लें इस पे, and I am denoting by T1, so it will be what, perpendicular to T, है ना, if it is Yes, sir. meeting it here, it T के perpendicular होगा, and you know, Yes, sir. here by the Frenet formula there will be B and N as well, यहाँ पर B भी होगा और N भी होगा, जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे इस T के, this will be your B, and here some vector will be N also, it will be having this mutually orthogonal frame, है ना, at every point there is associated a frame which is called Frenet trihedron, so it will be NB. Is it clear? Yes, sir. Because I want to write now expression for this, so I will find now expression for the evolute, expression for evolute. So here we have this point PR, we have point P1 R1, so the P1 R1 point will be lying, ये point किधर आएगा, this point, I am denoting by P1 R1, the point P1 R1, it is just the notation, they must lie in the, ये देखो ये T1 किसका, ये T1 is the normal to T, तो T1 कहाँ लाई करेगा, in the normal, तो normal का मतलब can I say it will be lying in the normal plane, भाई कोई वेक्टर जो आपका BN plane, the plane made by BN is called normal plane, है ना, तो जो T के normal होगा वो हमेशा वेक्टर कहाँ लाई कर रहा होगा, normal plane में, NB से जो बना हुआ है ना, NB पे कोई भी वेक्टर अगर आप लें it will be normal, क्यों, क्योंकि जो आपका वेक्टर ये प्लेन होता है नॉर्मल प्लेन,
you know you have 3 planes, है ना? This is your tangent, this is your normal, this is your binormal. तो जो ये वाला प्लेन कहलाता है binormal plane. तो any vector in the normal plane, इसको हम क्या कहते हैं? Normal plane, NP. Any vector will be always perpendicular to tangent. इस पे कोई आप वेक्टर ले ले, हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना in the normal plane. So because this T1 is normal to T, so T1 will be lying where? In the normal plane. Normal plane. है ना? You just take in your room, you can visualize the thing. Take the corner. You have 3 axes T and B. तो T के perpendicular plane कौन सी आएगी? जो wall आपके राइट में आ रही होगी. That will be a normal plane. तो जो point P1 R1 है, this will be lying in the normal plane. क्यों? क्योंकि ये T1 आपके इस T के perpendicular है by the definition. So the point P1 R1 must lie in the normal plane. That means I can say, that means can I say R1 minus R lies in the normal plane. At PR, वो नॉर्मल प्लेन कहां पर? जो PR पे आपका नॉर्मल प्लेन बनेगा इस पॉइंट पे, है? क्योंकि R1 माइनस R क्या है? ये वेक्टर भी तो आपका इट इज लाइंग इन दिस टेंजेंट प्लेन, और ये टेंजेंट प्लेन क्या है? यही नॉर्मल प्लेन बनना है आपका. सो इनफैक्ट R1 माइनस R विल बी लाइंग इन द R1 माइनस क्या, देखो T1 इज इक्वल टू हाउ मच? R1 माइनस R. T1 is the vector, है ना, by this origin. So I can say R1 minus R lies in the normal plane. That means what? R1 minus R can be written as a scalar multiple if I am taking some alpha s ns plus beta s bs. It is what? In normal plane it is generated by binormal and normal. So any vector R1 minus R can be written as a linear combination of alpha n plus beta b. Is it clear? Or you can say R1 is nothing but Rs plus alpha s ns plus beta s bs. So it is the equation of this evolute. अब यहाँ पर मुझे अल्फा और बीटा फाइंड करनी है, ठीक है? It is the equation of evolute R1. R1 is representing the parametric position of C1. So I have to find alpha and beta. ना इसे अभी हम 1 कर दे रहे हैं. So now how I will find differentiating it? It is a function of S. All are the function of S, suppose. So I will differentiate and I will see. I want to find alpha beta. So differentiating one with respect to S, we get, so here on the left hand side you have dr1 over ds. So you have dr1 over ds is equal to, right hand side where you have rs is r dash, so it will become r dash plus, now alpha beta they all are function of S, so I will use by part. So you can write plus alpha dash n plus alpha n dash, and it is understood they are vectors, plus same thing beta, so beta dash vector b plus beta and b dash, you know, they are function of S, and you can solve it. So it will become r dash is vector t, you know, plus alpha dash n plus alpha n dash is minus kappa tau plus tau b, kappa t, sorry, it is kappa t, है ना, tb, and plus beta dash b plus beta and b dash is minus tau n. Is it clear? I just open all these dashes by the CNET Fahrenheit formula, जो हमने डैश निकाले थे, ये इनकी वैल्यूज हो गई. याद है CNET Fahrenheit formula में हमने डैश निकाले सारे, उसको याद करने का तरीका ही बताया था आपको. ट्रायंगल की फॉर्म में ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक
ट्रायंगल बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी. So now you can put all the values, just arrange the terms of t. So t का term, here you have t, here you have t. So you had 1 minus alpha kappa t. Then vector n, this is vector n, this is vector n. So you have plus alpha dash minus beta tau n. And what is the vector b? How much? Plus beta dash and plus alpha tau p. So you got all these vectors. Is it clear? Now dr1 over ds is how much? Now since dr1 over ds, है ना? If I am writing this vector, it is t1. This is also tangent to c1. ये आपका जो t1 था, it is tangent to c1. This is curve is c1. Tangent to c1. तो अगर tangent to c1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? Parallel to tangent to c1 means it is parallel to r1 minus r, है ना? क्योंकि ये t1 भी आपका कहाँ लाई कर रहा है? जहाँ r1 minus r लाई करेगा. तो t1 is also lying in the normal plane, so it will be parallel to r1 minus r. So this is parallel to the vector r1 minus r. r1 minus r. और r1 minus r आपका क्या था? Alpha n plus beta b. It was your r1 minus r. ये लिखा था हमने. So it means what? कि this tangent, this t1 can also written as a some multiple of this, because these vectors are parallel. So that means I can say this t1 is some scalar a times of alpha n plus beta b. ये लिख सकता हूँ मैं t को, t1 को, है ना? ये जो हमने वेक्टर निकाला है t1, because it is also lying in the this tangent space, and this space is what? Here we see that this is vector which are lying in the normal plane. तो t1 भी normal plane में है आपका, क्योंकि t1 perpendicular है ठीक है, और r1 minus r भी normal plane में था. तो t1 will be multiple of beta b and n. So I can write a times of this, where a is any constant. A is some constant. Okay, so it means what? I can write dr1 over ds is a. So this equation will become here, hence a times of alpha n plus beta b, this equal to what? The left hand side is equal to right hand side. 1 minus alpha kappa t plus alpha dash minus beta tau n and plus beta dash plus alpha tau p. इसे इक्वेट करा दी. अब now when you are equating, तो क्या करेंगे? Equating the coefficients of like terms. t का टर्म यहाँ पे 0 है देखिए, n के coefficients को कराएंगे और b के coefficients को, because I want to find alpha beta. So equating the coefficients of the like terms we get देखिए, coefficient of t is how much? 1 minus alpha k, and coefficient of t in left hand side how much? How much? कितना है? 0. इसमें t का टर्म है ही नहीं. So you got this coefficient is equal to 0. So this implies that alpha is how much? 1 upon kappa. Alpha की वैल्यू निकलाई देखो ना, 1 upon curvature. इसको हम वो भी बोलते हैं radius of curvature. So it is alpha is 1 by kappa. Kappa के टर्म में लिखिए आप. Now second is alpha dash minus beta tau. This will be equal how much? n का coefficient क्या है? a alpha. This is equal to a alpha, and beta dash coefficient of b is beta dash plus alpha tau. So beta dash plus alpha tau, this will be equal to how much? A beta. Okay, a beta. Now I want to solve it. What I will do? Dividing. इसे divide कर दिया हमने. Dividing. फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे अभी. Less than a minute is showing. ये कल करें कंटिन्यू.
सर्कल करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि स्टूडेंट भी 10 है ना, 9 है। चलो ठीक है, चलिए तो इसे डिवाइड कर दे, इसे कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे जब आप, तो ए से ए कैंसिल हो गया, यू गॉट अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश माइनस बीटा टाउ अपॉन बीटा डैश प्लस अल्फा टाउ। और इससे अगर मैं टाउ को अरेंज कर लूँ बाय अरेंजिंग द टर्म्स, टाउ विल बी कमिंग बीटा अल्फा डैश माइनस अल्फा बीटा डैश upon alpha square plus beta square by arranging the terms. This is the tau, and it is nothing but it is dds of cot inverse beta upon alpha.